Hello students, welcome to social science class. This is the last part of the video, the French Revolution. In the French Revolution, we have covered the rule of monarch, that was Louis XVI. After that, the rule of National Assembly, under which the citizens were divided into active and passive citizens. And then we have read the rule of Jacobin's government, that was called Convention. And then after, we have done the rule of Directory. Now next topic is the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? Yes, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस दी एवरी एक्टिविटी ऑफ पीपल. जैसे आजकल आप देख रहे हो कोरोना एरा में लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय दी गवर्नमेंट और दी डिसाइडेड बाय दी पॉलिटिक्स. तो वैसे ही 1789 के बाद फ्रांस में जितने भी गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने जो जो न्यू लॉज पास किए उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया and they realized the ideals of liberty and equality into everyday practice. Now the most important law that came into effect after the revolution of 1789 was the abolition of censorship. Earlier people were not having the freedom of speech and expression. Under Louis XVI there was no freedom of expression and books, newspaper, plays were published after the approval of censors of the king. But when National Assembly came into being, they gave the natural rights to citizen. Now people got the freedom of expression. They published their views in newspaper, pamphlets, books, and so much printed material flooded into the towns of France, and from towns it also rapidly moved into the countryside. Freedom of expression means expression of opposing views also. Now everyone wants to convince the others through the medium of print. But books can be useful for those who were educated ones. For uneducated people, plays, songs, festive processions were more attractive as they could grasp or identify the ideas of liberty and justice through these things only. Now, the fifth ruler of France was Napoleon. The political instability of Directory gave the way to the rule of Napoleon. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. Napoleon was the military dictator. उसने अपनी आर्मी की हेल्प से, मिलिट्री की हेल्प से फ्रांस और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को हरा कर फ्रांस में वो खुद एम्परर बन गया और नेबरिंग कंट्रीज़ में अपनी फैमिली मेम्बर्स को एडजस्ट कर दिया. बट हिज रोल इज़ सीन एज मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, क्योंकि उसने फ्रांस में इतने रिफॉर्म्स किए, इतने ज़्यादा सुधार लेके आया कि लोगों ने उसको मॉडर्नाइज़र कहना शुरू कर दिया. लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. स्पेशली बिजनेस क्लास जो थी वो नेपोलियन से बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड डेसिमल सिस्टम, जिसकी वजह से ट्रेड करना, बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था. एंड द मोस्ट कोमेमोरेटेड रिफॉर्म इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल सबसे पहले नेपोलियन ने ही इंट्रोड्यूस किया. उससे पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी किंग या स्टेट की होती थी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन ओनली. बट लेटर पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम, क्योंकि उसकी इन्वेडिंग फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस चारों तरफ फैल चुकी थी. लोगों को ये समझ आ चुका था कि किसी भी कंडीशन पे नेपोलियन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देगा, और लोगों को शुरू से ही पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी. उनको रिजिडिटी या वन मैन रूल बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. इकोनॉमिक फ्रीडम तो नेपोलियन ने दी लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी. सो दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम. एंड फाइनली इन 1815 he was defeated at the Waterloo by the monarchs. He ruled over France for 11 years. As he was defeated by the monarchs or the kings of the Europe combinedly, so after the rule of Napoleon, again there was the rule of monarch in the France. So we have covered the time period of 1789 to 1815, which is about 25 years. Within 25 years, 5 governments were changed, but the ideas of liberty and freedom were not realized, and it became the legacy of the French Revolution. From France, these ideas spread to rest of the Europe, where people struggled to abolish the feudal dues and other kind of taxes. And slowly the ideas of freedom become the ideas of creating nation state. And 2 individuals from India, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy, they also responded to the ideas of French Revolution.
और फ्रांस से, यूरोप से ये आइडियाज़ धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। नाउ द मैप ऑफ फ्रांस। This is the France map and I have underlined 4 locations on map. This is only your syllabus. 2 locations are belonging to the point that you have done in the triangular slave trade. There are 2 ports. One is Nantes and second is Bordeaux. The location at the bottom is the place called Marseilles. This is the place where first time revolutionary people sang the patriotic song Marseilles. And one location in the center of the map is city Paris. So this is the capital city of France because the palace of Versailles of Louis XVI was in the city of Paris. With this your chapter is over. In the next video we will start with the civics chapter. Till then, stay home, study at home and be safe. Thank you.